हरि ओं गंगे च मने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कुरुत्र गंगा प्रवास एतानि पुण्यतीर्थानि देवस्नानकळभवन्तय मध्यरात्रिकालीन जन्माष्टमी पूजा अवसरे भाद्रव कृष्ण पक्षे चाष्टम्यां च शनिवासरे रोहिणी वृषरासो श्रीचन्द्रमसि शुभे स्थिते कर्के श्रीभास्करे चाद्य डिण्डोरी मण्डलान्तरे अनखेड्यन्नक्षेत्रे च धर्मशालां समागते गौळन्त्र गौतम गोत्री कैलासलोचनात्मकः दुर्गाप्रसादमासाद्य कनके ईश्वर कृपया करिष्येऽहमभिषेक मारत्रिकुञ्च पूजनम् कनकेशोपदेशाभ्यां श्रीकृष्ण भगवन् मम नमामि कृष्णकंसारिं नमामि केशवाच्युतं नमामि कालकराळं कळ्यासपतिचिन्तकं नमामि बालमुकुन्दं नमामि नन्दनन्दनं नमामि वासुदेवात्मा अजं च यशोधरासुतं नमामि देवकी बालं नमामि राधिकाप्रियं नमामि श्रीहरिविष्णुं नमामि मीनरूपिणं नमामि कच्छपरूपं नमामि श्रीगुरुमहं नत्वाहं च जगन्नाथं बद्रीनाथं नमामि च नमस्ते गरुडेशोषि लक्ष्मीकान्तो नमस्तुते नमो श्रीकनकेशस्ते नमो नमस्तुते प्रभो नमस्तस्मै 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 नमो नमः नमस्तुते भगवश्री बौद्धकड्गी स्वरूपिणे नमो नौमि तव चरणे नित्यमचिन्त्यरूपिणं न मे अस्ति बन्धु सखा च नास्ति मे त्वमृते अत्र कः नास्ति पिता न च माता नास्ति भ्राता स्वसापि न हि मे जीवने कश्चित् केवलमस्ति मत्प्रभु न जाने स्तुतिमपि न अहं च जाने च कीर्तनं नास्ति वाणी मामि इव श्रीहरिगुणस्य कीर्तने नास्ति भक्तिश्च तथैव यथा श्रीहनुमत्प्रभो नाहं जाने तव किञ्चित् तदाप्यस्ति तत् अमृतता। अद्य रात्रि दशघट्टिकायां मया श्रीबुद्धीश्वराष्टकं रचितम्। अहं भगवत सप्तमुख्य लक्ष्मीनृसिंहं पूजनं करोमि। सप्तमुख्य लक्ष्मीनृसिंह एव मम इष्ट, अतएव तदनुयायी अष्टकं जगन्नाथ अष्टकवत् मया रचितमस्ति। गणेशे चास्ति श्री हनुमतिमद्भक्तिसुखदा भजामि सञ्च श्रीनरहरिमपीष्टं च मनसा विचिन्त्य श्री बालाजी नमति सुखायैव च सजा बुद्धेशो श्री सेव्यो विपदिरक्षकस्तं भव सदा पुनश्च श्रीरामस्य चरितममियं च पठितम् पवित्रात्मा कृष्णाय भजति हि नित्यं च सुखदम् नृसिंहस्य श्री सप्तमुखमति सौख्याय लसितम् बुद्धेशो श्रीसेव्यो विपदिरक्षकस्तं भव सदा जानन्यत्रैवास्ति स्वयमिति मतिर्मे स्मरतीता यथा गायत्री श्रीसुरनरसुखा यैव रक्षकां तथा गंगा श्रीपतिशिवसखा सेनजनिता बुद्धेशो श्रीसेव्यो विपदिरक्षकस्तं भव सदा करोमि सार्धांगी मापि न मनामद्यात्र मनसा करोति पूजां च कनकवती
शैवकमला करोति श्रीवाणी मम सुखकरं चेस कृपया बुद्धिषु श्रीसेव्यो विपदिरख्यकस्तं भव सदा कथं चात्रैवास्ति स्वयमिति सीता कृतकृपा सीता च कृतकृपा कृपास्तिवन्तस्याश्च कनककटाक्षेव सुखदा करोमि श्रीराधा चरणममृतास्रामपि सदा बुद्धिषु श्रीसेव्यो विपदिरख्यकस्तं भव सदा कदाचित् रूपं चात्र सुखकरमस्तीशवदनं कदाचित् तद्देव्याश्च कनकमुखात् उज्ज्वलवदनं करोति श्रीचम्बा निजशिशुरख्यां चेशदयया बुद्धिषु श्रीसेव्यो विपदिरख्यकस्तं भव सदा महालक्ष्म्याश्चाश्रित्य कनकवतीं चैव मनसा सदा स्मृत्वाहं चात्र भगवती मत्या दृढतया रक्षित्वा भक्तिं चाद्यचलितपथि इष्टस्य भजने बुद्धिषु श्रीसेव्यो विपदिरख्यकस्तं भव सदा प्रभुश्च श्रीकृष्णस्य जननमतिपुण्यं च सुखदं ममातृवाद्यस्त्यात्मकुशलमिति श्रीशबारदं पथ्यासीद्ग्रामात्मीयजनवदति स्नेहसुखदं बुद्धेषु श्रीसेव्यो विपदिरख्यकस्तं भव सदा दुर्गा प्रसादकृतिदमष्टकं च अस्तु सततं सर्वजनहितायैव कनकेशबुधेशयोः शुभाशीर्वादरूपेण राजतां चिरसन्मति विश्वजनगणमति सुच धनजनिश्चिरम् पुरुष सूक्तम हरि ओम गतक्सं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मनुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सं नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे आं सन्ति ओं सन्ति सन्ति ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राख्य सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यातिष्ठदसङ्गुणं पुरुषायेवेदं सर्वं जडभूतं यच्च भाव्यम् उत मृत्वत्वशेषान् जजनेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायंश्च पुरुषा पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादो ऊर्ध्वं उदेत् पुरुष पादस्याभवत् पुनः ततो विश्वं व्याक्रम शासनाशने अभि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अचरिच तपश्चात् भूमिमथो पुरः यत पुरुषेण हरीश देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासिद् आज्यं ग्रीष्मैध्मं शरद्भि तं यज्ञं वरिषि तं यज्ञं वरिषि प्रोक्ष्यन् पुरुषं जातमग्रत तेन देवा यजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माज्जज्ञा सर्वभूत संवृतं कुशदाज्यं पशुंस्तं च कृवयजन्नारायण्यन् ग्राम्यश्च ये
तस्माज्जज्ञा सर्वभूता रुचाः समानी जगिरे छन्दांसि जगिरे तस्माज्जध्रुः तस्माज्जायत तस्मादस्वा अजायन्त ये केचुवयादत गावः जगिरे तस्मात् अजावय यत् पुरुषं व्यदधु कतिदा व्यकल्पयन्मुखं किमस्य को बाहु काहुरुपदाहुचेते ब्रह्मणो अस्य मुखमासि बाहुराजन्यकृताहुरु तदस्य जदवैश्याः पदभ्यं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं सिष्णुभ्यो समवर्तत पदभ्यं भूमिरीशा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् सप्ताशासन् परिधयस्त्रिसप्तसमिधा कृता देवा जज्ञं तन्माना अवदन् पुरुषं पशु यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानं सचन्त्र यत्र पूर्वे सध्यासन्ति देवाः। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः कृष्णजन्म। श्रीशुकवाच अथ सर्वगुणोपेत कालपरमशोभनः जरीवाजनन्मार्ख्यं सन्तर्क्याग्रहतारकं दिशा प्रसेदुर्गगनं निर्मलोड्डुगणोदयं महिमङ्गलभूयिष्ठ पुरग्रामप्रजाकरा नत्यप्रसन्नसलिला हृदजालरुह श्रियः द्विजलीकुलसन्नाद स्तवका वनराजय बभुवायुसुखस्पर्श पुण्यगन्धवः शुचि अग्नयश्च द्विजातीनां सन्तास्तत्र समिन्धत मानांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरगृहां जायमानि अजनि तस्मिन्निदुर्दुन्दुभयो दिवि जगो किन्नरगन्धर्वा स्तुष्टुभूसिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च ननृतु अप्सरो विषमं तदा मुमुचुर्मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्विता मन्दं जलधरा जगर्जुरानुसागरं निशिते तमोद्भूते जयमाने जनार्दने देवक्यं देवरूपिण्यं विष्णुर्सर्वगृहाशय आविरासि यथा प्रचण्डीसिन्धूरिव पुष्कलः तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सन्द्रपयोधसौभगम् महारावैदुर्यकिरीटकुण्डलत्विष परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्च्याङ्गजकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्यत स विस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकादुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव सम्भ्रमो अस्पृशन् मुदा द्विजेभ्योऽयूतमाप्लुतो गवम् अथेनमस्तौदवधार्य पुरुषं परं नताङ्गः कृतधिकृताञ्जलि स्वरोचिषा भारतसुतिकगुहं विरोचयन्तं गतभिप्रभाववीत्। वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानन्दस्वरूप सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृतिदं स्रष्टाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनुतं ह्य प्रविष्टं इव भाव्यासि अथे मे अविकृता भावास्तथा ते विकृतैः सह नानावीर्यः पृथग्भूता विराजं जानयन्ति सन्निपत्य समुत्पद्य दृश्यन्ते अनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वात् तेषामिह सम्भवाव। एवं भवान् बुद्ध्यानुमीय लक्षणैर्
ग्राहिर्गुणी सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस सर्वात्मन् आत्मवस्तुनः य आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्व व्यतिरेकतो अबुध विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यक् यतस्त्यक्तमुपाददत् पुमान् त्वतो अस्य जन्मस्थिति संयमान् विभो वदन्त्यनिहाद गुणाद् विक्रियत् त्वयीश्वर ब्रह्मणि नु विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणि सक्तं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसो औपावृतं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्ययि त्वमसलोकस्य विभोरिरखिषु गृहेषु अगृहे अवतीर्यो ओ असि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपि निर्व्यूह्यमाना निहनिष्यसे च मुहुः अयं त्वासभ्यस्तव जन्मनो गृही श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीत् सुरेश्वर स ते अवतारं पुरुषे समर्पितं श्रुत्वा धूनिवाभि ईशरत्युदायुधः शिश्रुकवाच अथेनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसभीता शुचिस्मिता देवकीवाच रूपं यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणनिर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सतं सख्यद्विष्णुरध्यात्मदीप नस्ते लोके द्विपराधावसाने महाभूतेष्वाधिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याते भवान्निकषिष्यते शेषसंज्ञा योऽयं कालस्तस्य ते अव्यक्तबन्धो चेष्टा माहुश्चेष्टते येन विश्वं निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयांस्तं त्वसेनं त्वेषानं केम धाम प्रपद्ये मृत्यु मृत्युर्व्यालभीता पलायन् लोकान् सर्वान्निर्भयनाध्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थः शते मृत्युरस्मादपैति सत्यं घोरादुग्रसेनात्मजानांस्त्रयी तरस्तान् मृत्युवित्रसहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानाधीष्ट्यं मा प्रत्यक्षं मा सदृशं कृषिष्ठा जन्म ते मयशो पापो मा विद्यान् मधुसूदन समुद्विजे भवत्येतो कंसादहमधिरधिः औपसंहर विश्वात्मनदो रूपमौलौकिकं शङ्खचक्रगदा पद्मश्रिया जुष्टं चतुर्भुजं विश्वं जदेतत्स्वतनो निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवन् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो अभूत् अहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तत्। श्रीभगवानुवाच त्वमेव पुत्रा सर्गे अभूकृष्णी स्वयंभुवे सति तदायं सूतपानाम प्रजापतिरकल्मषः युवं वै ब्रह्मणा अदिष्टो प्रजासर्गे जजातत् सन्नियमेन्द्रियग्रामं ते पाथे परमं तप वर्षवतातपहि घर्मकालगुणाननु सहमानो श्वासरोधविनिर्धूतमनोमळो शीर्णपर्णानिलाहारभूप शान्तेन चेतसा मत्तः कामानभीप्सन्तो मदाराधनमीहतुः एवं वाताप्यतोऽस्तीव्रं
तपपरमदुष्करं दिव्यावाससहस्रणी द्वादशेयुर्मदात्मनो तदावं परितुष्ट अहममुना वपुषा नघे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः प्रादुराशं वरदरात् जुबयो कामदीच्छया ब्रियतांबर इत्युक्ते मादृशो वाङ्मृतः सुतः आजुष्टग्राम्य विषया वनपत्युच्च दम्पति न पप्रार्थे अपवर्गं मे मोहितो मम मायया गते मयि युवं लब्धा ब्रह्मसदृशं सुतं ग्राम्यं भोगान् भुञ्जाथं युवा प्राप्तमनोरथो अदृष्टवान्यतामलोके शीलोदार्यगुणी समन् अहं सुतं वामभागं कृष्णीगर्भ इति श्रुत तयोर्वं पुनरेव अहमादित्य अमाशकस्यपत् उपेन्द्र इति विख्यातो वामनस्तश्च वामनः तृतीये अस्मिन् भवे अहं वै तेनैव पूषार्थवान् जातो भूय भूयस्तयोरेव सत्यं ते व्याहृतं सति एतत् वं दर्शितं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गं न जायते यो वं मा पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन च सकृत् चिन्तयन्तो कृतास्नेहो यासीथे मद्गतिं परां शिशुवाच इत्युक्ता सिद्धा अरिस्तुस्मिन् भगवानात्ममायया पितृः सम्पश्यतो सद्यो बभुव प्राकृतः शिशुः ततश्च शौरिर्भगवत्प्रचोदितः सुतं समादाय संसुतिकगृहात् यदा बहिर्गन्तुमीश तर्यजा यायोगमाया जनिनन्दजायया तया हृतप्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरेष्वपि शायितेष्वथ द्वारस्तु सर्वा पिहिता दुरत्यया बृहत्कपाटाय सकीलशृङ्खलिः तः कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं अर्यन्त यथा तमोरवे ववर्ष पर्जन्य उपांशुगर्जितः शेषु अन्वगात् वारिनिवारयन् फणिः माघोनि इवर्षत्य सत्क्रूयमानुजा गम्भीरतोयो यो औघजवोर्मिफेनिला भयानका वर्तसताकुला नदी मार्गं ददौ सिन्धुरिव श्रीहपतेः नन्दव्रजं शौरिरुपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रासुप्तानुपलभ्य निद्रया सुतं यशोदाशयने निधाय तत्सूतामुपादाय पुनः गृहान् आगत् देवक्या शयनेन्यस्य वसुदेव अथ दारिकां प्रतिमुच्य पदो लोहो यास्ति पूर्ववदावृतः यशोदानन्दपत्नी च जातं परमबुध्यत न ततलिङ्गं परिश्रान्ता निद्रयापगतस्मृतिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः। अथ कृष्णाष्टकं श्रीकृष्णाष्टकं भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दन सुपीच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं यनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्भमोचनं विशाललोचनलोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं
नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनुकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं जशोदया समोदय शगोपयासनन्दय युतं सुखेकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकभूषणं समस्तगोपमानसं नमामि कृष्णलालसम् भुवो भरावतारकं भवान्तिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि दुग्धचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा लसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपावरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनाशनागरं नवीन केळिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडिप्रवालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजेकमोहनं नमामि कूजमध्यकं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुषायकं रसाळवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपायिनं यदा यदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रामाणिकाष्टकद्वय जपत्यधीत्य यः पुमान् भवेत् स नन्दनन्देन भवे भवे सुभक्तिकम् इति श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचित कृष्णाष्टकं सम्पूर्णम्। हरि ओम्। अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति मृगाङ्गने मुकुलाभरणं तमाल अङ्गे कृता किल विभूतिरपाङ्गलील मङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय मुग्धा मुहुर्विदधते वदने मुराय प्रेम कृपा प्रणिहितानि गतानि मालादृशोर्मधुकरीव मुहोत्पलेज सामेशि सुसागर सम्भवाय विश्वामरेन्द्रपदवी ब्रह्मदानधैक्य मानन्दहेतुरधिकं मुरभिर्विशोऽपि ईशानिशेषमयि कणमिगणात् निन्नेव आमीलिताख्यमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आख्येकरास्तकनीनिगपद्मनेत्रं भूतिर्भवेन्मम भुजङ्गसयङ्गनाय बाहुं करे मुदितसितकौस्तुभेज हारावलीव हरिनीलमयि विभाति कामः प्रजा भगवतोर्विकटैक्यमाला कल्याणमा बहुत मे कमलालयाय कालाम्बुदलुलितोर्जगैठवारे धाराधरे स्फुरतिजातलिङ्गनेव मातु समस्तजगतं महनीं निर्भद्राणि मेषभार्गवनन्दनाय प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावन् मङ्गल्यभाजमुजमासिनिमन्मनेन मज्जापदमन्तरमीक्षणार्थं मन्दालसमकरालय कन्यकाय तद्यादयानुभवं द्रवणं वदार मस्मिन् किञ्चन विहङ्गसुविशन् दुष्कर्म घर्म अनिचयाय दूरं नारायण प्रणयानुभव इष्टाभिशिष्टं जया जया दृष्ट्या त्रिविष्णु सुलभं लभन्ते दृष्टे प्रहुष्टकमलोदरतिष्ठन् पुष्टिं कृशिष्टमपुष्टविष्टराय गिरिजगरुडसुन्दरीति साकमशशिवलविति सृष्टिस्थितिप्रलयगुणसंस्थिताय तासे नमस्त्रिभुवनेक गुरुस्तरुणि श्रुति नम शुभकर्म फलाप्रसूते रते नम रमणगुणान्नवाय शक्ति नम सदपनिकेतनाय पुष्टि नम पुरुषनबलवाय नमोस्तु नालिकनिवारणाय नमोस्तु दुग्धधर्मभूते नमोस्तु सोमां प्रसुराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय संप्रदान संप्रदान सर्वरहके त्वद्वनृतानि मामे मात्रं पडन्त मान्ये जगत्कटैकसमुपासना विधिः सेवक संपदा वदनानि शेषितं वरैर्भुमजे सरसिजन सुरधवळतं धवळतमं सुगन्धमलसुभे भगवते हरि वलमन त्रिभुवन बुद्धिर्बलमयं दिग्गस्तिवे कनकुमं मुखापसृष्ट शोभयेन्निवे स्वयं जलभजन् प्रातर्नमामि जगदञ्जननि मशेष लोकादिनाथ गृहिण मम रजनि कमले कमले के बोलवेतं करुणापुरतरं अवलोकनं किञ्चनानं पदं पातमं कृतजय सुबन्धि जय स्तुभं विरण्वं त्रय मैत्रिगुणवतं गुणाकर गुरुतरभाजयं भवन्ति ते भुवि बुधभाजसय सुबर्णधर सुधन जलसमरणं त्रिशन्न जापडेन सकविर समय इति सीमासंप्रदाय
श्री गुरु चरणाभ्यं नमो नमः आदि संप्रदाय नमो नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु समेत तस्मै श्री गुरवे नमो नमः श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोविंदनवलवाय नमो नमः क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोविंदनवलवाय नमो नमः ओम 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 नमः भगवते वासुदेवाय 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 नमो नमः ओम उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं क्रमतोमगं नृसिंहं विषाणाभद्रमुक्तुमुक्तु नमाम्यहम् ओम उग्रं वीरं महालर्वातामगं नृसिंहं विषाणाभद्रमुक्तुमुक्तु नमाम्यहम् ओम उग्रं वीरं महाविष्णुर्वातामगं नृसिंहं विषाणाभद्रमुक्तुमुक्तु नमाम्यहम् ओम श्री गुरु चरणाभ्यं नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरवे नमो नमः ओम जगद्गुरवे नमो नमः ओम जगद्गुरवे नमो नमः ओम जगद्गुरवे नमो नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युमुक्षमामृतं नमो नमोदुपदेश्वराय नमः ओम नमो नमोदुपदेश्वराय नमो नमः ओम नमो नमोदुपदेश्वराय नमो नमः ओम उग्रं वीरं महालर्वातामगं नृसिंहं विषाणाभद्रमुक्तुमुक्तु नमाम्यहम् सप्तमुख्यनृसिंहेन सह सप्तमुख्यमहालक्ष्मी नमस्ते ओं गणानङ्कः गणपतिगुं हवामहे प्रियाणङ्कः प्रियपतिगुं हवामहे निधीनङ्कः निधिपतिगुं हवामहे गणनाथाय नमो नमः ओं श्री गुरु चरण सरोज राज निजम नमो गुरु सदारि वरनो रघुवर विमल जगमल ओं हनुमते नमो ओं हनुमते नमो ओं हनुमते नमो नमः ओं त्र्यंबकं यजामहे शरण्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युमुक्षमामृतं नमः नर्मदावधेश्वराय नमः नर्मदावधेश्वराय नमः नर्मदावधेश्वराय नमः नर्मदाकेदारेश्वराय नमः नर्मदाविश्वेश्वराय नमः नर्मदासोमेश्वराय नमः नर्मदानागेश्वराय नमः नर्मदा त्र्यंबकेश्वराय नमः नर्मदा भीमशंकराय नमः नर्मदा कृष्णेश्वराय नमः नर्मदा ओमकारेश्वराय नमः नर्मदा महाकालेश्वराय नमः नर्मदा विद्यानाथाय नमः नर्मदा मल्लिकार्जुनाय नमः नर्मदा रामेश्वराय नमः नर्मदा लिंगराजाय नमः नर्मदा लोकनाथाय नमः नर्मदा ओम नमः नर्मदा गोकर्णेश्वराय नमः नर्मदा ब्रह्मेश्वराय नमः नर्मदा ईशानेश्वराय नमः नर्मदा संदेश्वराय नमः नर्मदा कपिलेश्वराय नमः नर्मदा गुप्तेश्वराय नमः नर्मदा डिंडोरीश्वराय नमः नर्मदा अन्नकेडस्त अन्न धर्मशालास्तैश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा विश्वशान्तिकारकाय नमो नमः हरि ओम उग्रं वीरमर्वातामगं नृसिंहं विषाणाभद्रं मृत्युमुक्षुं नमाम्यहम् ओम नृसिंहाय नमो नमः ओम नृसिंहाय नमो नमः ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः ओम बालनारायणाय नमो नमः रंगनामाय 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 ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोविंदनवलवाय नमः ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोविंदनवलवाय नमः ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोविंदनवलवाय नमः ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोविंदनवलवाय नमो नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात् गायत्री नमो नमः गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी गंगा प्रभृति एतानि पुण्यतीर्थानि देवस्थानगमनं गंगादि सप्तमातृकादेवी नमो नमः हरि ओम दुं दुर्गाय नमः 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 ओम कर्णधाराय नमः कर्णधाराय नमः कर्णधाराय नमः कर्णधाराय नमः कर्णधाराय नमो नमः ओम पावकान सरस्वती वाजवी वाजव सरस्वती नमो नमः या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रंगृता
या वीणा वरदन्न मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मचितसन प्रभु सदा वंदे सामां जटम सरस्वती नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः। ओम सिंसिताय नमः सिंसिताय नमः। ओम रंगराधाय नमो रंगराधाय नमो रंगराधाय नमो रंगराधाय नमो रंगराधाय नमो नमः। ओम संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिर्व्यानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं जलाचन्द्रभाषणिताय परमात्मने बलभद्रस्वजगन्नाथाय नमो नमः। ओम जगन्नाथाय नमो नमः। जगन्नाथाय नमो नमः। ओम बद्रीविशालाय नमः। बद्रीविशालाय नमः। ओम नमस्ते महामय श्री विटेश्वर पूजते चंद्रग्रह महालक्ष्मी नमस्ते गरुडारूढ कुलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते गरुडारूढ कुलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेव 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 नमो नमः। श्री हरि नारायण नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेव त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्याधर्मं त्वमेव सर्वं मम देवदेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् बाधं श्रीगुरुचरणाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः तस्मै गुरवे नमो नमः। ओम गम्भीरमहावतारकं नृसिंहं शनावतमुतं नमामि सत्यमेकलक्ष्मीनृसिंहाय नमो नमः। ओम श्रीलक्ष्मीनृसिंहाय नमो नमः। ओम श्रीलक्ष्मीनृसिंहाय नमो नमः। श्री हरिनारायण नमस्ते गरुडारूढे गोळासुरभयंकरी सर्व पापहरि महालक्ष्मीनमस्ते। अद्य श्रीकृष्ण जन्माष्टमी तिथौ अष्टमी युक्त नवमी तिथौ रोहिणी नक्षत्रे भगवत श्रीकृष्णस्य जन्मोत्सवं सर्वेषां मंगलाय भवतु। श्रीहरिनारायण नमस्ते गरुडारूढे गोळासुरभयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणाभ्यां नमो नमः। नमस्ते गरुडारूढे गोळासुरभयंकरी नमो नमः। श्रीहरिनारायण नमो नमः। ओम श्रीहरिनारायण नमो नमः। ओम श्रीहरिनारायण नमो नमः। गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमो नमः।